प्रीवियस क्लास रे में किछि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रो प्रॉब्लम करथिले आज आ किछि प्रॉब्लम करिवा एटा क्वेश्चन नंबर 9 नो एक्सरसाइज 2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 9 नो बिट 5 क्वेश्चन हो सॉल्व माने पिले मैक्सिमम पिला भूल कर दियंती कोन सॉल्व टा को भाबी दियंती जेने हम प्रूव करिवा से भूल हो जाए मैक्सिमम पिलांगर solve tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 by x plus 2 is equal to pi by 4. हमें समझ जानी चाहिए tan inverse x plus tan inverse y रा फार्मूला tan inverse x plus tan inverse y रा फार्मूला होची कोन tan inverse x plus y by 1 minus xy if xy less than 1 मन पड़छि समस्तिंगर तले एठे जे मैं फार्मूला यूज करबी tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus x plus 1 by x plus 2 divided by 1 minus x minus 1 by x minus 2 into x plus 1 by x plus 2 is equal to pi by 4 लिखले चलेबो नै tan inverse 1 बोली लिख देले चलेबो because tan inverse 1 equal to pi by 4. now tan inverse x plus y रा फार्मूला एठी पुट करली but tan inverse x plus tan inverse y पे ए फार्मूला लिखला पे हेले कंडीशन ता कोन xy less than 1 ता माने x minus 1 by x minus 2 into x plus 1 by x plus 2 less than 1 असो ए कंडीशन ता असोनी अच्छा बटन आपको रिमूव सॉल्व करबी this equal to 1 again solving this we get x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 divided by x square minus 4 minus x square plus 1 समस्त बुझी परछे काई आसुची काई ना एठी एलसीएम x minus 2 into x plus 2 एठी भी एलसीएम x minus 2 into x plus 2 कैंसिल हो गेला is equal to 1 अगेन आपको जदि मु सॉल्व करबी x square minus 1 by x square minus 4 minus 1 less than 0 समस्त बुझी परछे कंडीशन ता काई गेसला ना tan inverse x plus y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy if xy less than 1 सेति पे कंडीशन ता को लिखली ताको जदि सॉल्व करिबा ये x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x minus 2 plus x square minus x minus 2 ako multiply kare divided by minus 3 equal to 1 and ako this solve kariba x square minus 1 minus x square plus 4 by x square minus 4 less than 0 again ako solve kale edi plus x minus x cancel ho jibo 2x square minus 4 equal to minus 3 and 3 by x square minus 4 less than 0 again 2x square plus equal to 2x square equal to 1 and x square minus 4 less than 0 since positive by x square minus 4 less than 0 obviously reciprocal level with this also less than 0 now x square equal to 1 by 2 and x square minus 4 less than 0 here roots of this equation are plus 2 and minus 2 here coefficient of x square is positive so we start from positive negative positive now x equal to plus or minus 1 by root 2 and x belongs to minus 2 to 2 now this x equal to plus or minus 1 by root 2 lies between minus 2 to 2 so both are solutions implies x equal to plus or minus 1 by root 2 are the solution of this inverse trigonometric equation समस्त बुझी परछे कथाटा को भल से ध्यान दियो आ गोटे क्वेश्चन कहूची जो क्वेश्चन के हमें पाइबा जे से सेकंड पार्ट को यूज न कले कोन होची तमे कहबो जे मोर त सेकंड पार्ट यूज न कले आंसर पाई जेबी बट आ गोटे क्वेश्चन हम यूज करबे सपोज आ गोटे क्वेश्चन नउची कारण त मन मते क्वेश्चन आस तो मोई पार्ट को न लिखले जे पार्ट आसी आंसर पड़े आसी से x = +- 1 by √2 देखा जो ये असुविधा होची
solve tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4. Tan inverse x plus tan inverse of y. Use the formula tan inverse x plus y by 1 minus xy equal to pi by 4. सपोज तमे लिखि दउछ तथा बेटी देखला सेठी ए पार्ट को ओमिट करके देखला की करू छै नहीं करूनी एठी भी कंडीशन कोन x square less than 1 that is 6x square less than 1. Now 5x by 1 minus 6x square is equal to tan pi by 4 because tan inverse of x equal to pi by 4, so x equal to tan pi by 4 and 6x square minus 1 less than 0. Again, by now this equal to 1. Now by using cross multiplication and root 6x plus 1 whole into root 6x minus 1 less than 0, we can write 6x square plus 5x minus 1 equal to 0 and x belongs to minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6. The roots of this equation are minus 1 by root 6 plus 1 by root 6. Again, by solving this equation, here multiplication is 6 minus 6x square, addition is plus 5x. So arrange in this way, plus 6x minus x minus 1 equal to 0 and x belongs to minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6. समस्या जानि छै क्वाड्रेटिक केन दिसले काई ने रूट उडा नै जिबा हमें गोटे होछि minus 1 by root 6 और होछि plus 1 by root 6. इडी x रो कोएफिशिएंट root 6 both are positive, so we start positive from right side, positive negative positive. As this is less than 0, so you consider the value the negative part. X belongs to minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6. तो लेको ये में सॉल्व करिएगा 6x whole into x plus 1 minus 1 whole into x plus 1 equal to 0 and x belongs to this. Now x plus 1 whole into 6x minus 1 equal to 0 and x belongs to minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6 open. Implies x equal to minus 1 or 1 by 6 and x belongs to minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6. ते ध्यान दियो समझते ये minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6 भितर कोटा आसीबो minus 1 टा आसीबो की एठी भी तमे the minus 1 1 by 6 battery हमें कोड को नंबर ध्यान दियो रियल एक्सिस पे पुट करो यस तो minus 1 by root 6 plus 1 by root 6. चले ठीक x equal to minus 1 by 6 और 1 by root 1 by 6 और 1 by root 6 ভিতরে এটা minus 1 তে পড়ে আসি বলি but 1 by 6 1 by root 6 ভিতরে তো সমস্যা নিচে root 6 is less than 6 obviously 1 by root 6 greater than 1 by 6. So 1 by 6 lies in between this, but minus 1 does not lie in between minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6. Implies x equal to 1 by 6 is the solution. समस्त बुझी पाल एटा कहने x equal to minus 1 गोटे 1 by 6 गोटे but minus 1 और 1 by 6 minus 1 by root 6 to plus 1 by root 6 भितर लाइज करिवनी कारण minus 1 एपटे पड़े आसीबो एटा आसला 1 by 6 टा
-1/√6 to +1/√6 ଭିତରେ ରହିବ so x equal to 1/6 is the solution ତମେ ଯଦି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଛାଡ଼ି ଦବ ତମେ ଦିଟା କ ଲେଖି ଦବ ବଟ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁशन କଣ satisfy କରିବନି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ସେ ଟାଇପ ର ନିଜେ ବି ତମେ କରିବା କଥା ଏଟା ସବୁ जे तमे करूण मते करिया पडुची सपोज आउट क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स 1/2x plus 1 एटा होची क्वेश्चन नंबर 9 6th page solve tan इनवर्स 1/2x plus 1 plus tan inverse 1/4x plus 1 is equal to tan inverse 2/x square. You have to solve this equation. Tan inverse 1/2x plus 1 plus tan inverse 1/4x plus 1 equal to tan inverse 2/x square. Solve this. Now use the formula tan inverse x plus y by 1 minus xy is equal to tan inverse 2/x square. एठी कंडीशन हम यूज करिए कोन xy less than 1 that is 1 by 2x plus 1 whole into 4x plus 1 is less than 1 एटे प्रेस ना को जे सॉल्व करिवे एलसीएम नेलेटा कोन 4x plus 1 plus 2x plus 1 by 8x square plus 6x plus 1 minus 1 कणा को तले सॉल्व करिवे 2x plus 1 into 4x plus 1 को मल्टीप्लाई करले 8x square plus 6x plus 1 minus 1 is equal to 2 by x square and एठी भाई मु सॉल्व करिवे 1 by 8x square plus 6x plus 1 minus 1 less than 0 again आपको सॉल्व कर ले 6x plus 2 by 8x square plus 6x equal to 2 by x square and it is 8x square plus 6x plus 1 it is 1 minus 8x square minus 6x minus 1 less than 0 it is 3x plus 1 by 4x square plus it is x whole into 4x plus 3 by taking common 2 it is 3x plus 1 it is 4x square plus 3x by taking common x whole into 4x plus 3 equal to 2 by x square. Since x is not equal to 0 so we can cancel both x of the denominator since x is not equal to 0 if x is equal to 0 it is not defined and it is minus 2x whole into 4x plus 3 by 2x plus 1 whole into 4x plus 1 less than 0 3x square plus x equal to 8x plus 6 and by solving this roots of this equation are x equal to 0 minus 3 by 4 minus 1 by 2 minus 1 by 4 for the real axis रे put करिवि increasing order रे first put as verti देखत 0 रखि देली minus 1 by 2 कहले minus 0.5 minus 0.25 3 by 4 that is minus 0.7 so it is minus 1 by 4 minus 1 by 2 minus 3 by 4 start from negative positive negative positive negative again by solving 3x square minus 7x
minus 6 equal to 0 and x belongs to minus infinity to minus 3 by 4 union minus 1 by 2 to minus 1 by 4 union 0 to infinity multiply plus minus 8x square so को factorize करें minus 9x plus 2x minus 6 equal to 0 and x belongs to this part. Now 3x common will x minus 3 plus 2 will into x minus 3 0 and this part again x minus 3 will into 3x plus 2 equal to 0 and this part implies x equal to 3 or minus 2 by 3 and x belongs to minus infinity to minus 3 by 4 union minus 1 by 2 to minus 1 by 4 union 0 to infinity टे ध्यान से देखो एटी 3 टा रहइबो ना रहइबनी रहइबो minus 2 by 3 टा रहइबो ना रहइबनी minus 2 by 3 और minus 3 by 4 टे ध्यान से देखो यदि minus 2 by 3 और minus 3 by 4 भितरे 2 by 3 and 3 by 4 which is greater if you multiply एडी न्यूमरेटर को सेम कर दियो ना डिनोमिनेटर को सेम कर दियो एडी 3 मल्टीप्लाई करे 6 by 9 एडी 3 मल्टीप्लाई कर देले सॉरी 2 मल्टीप्लाई कर देले 6 by 8 it is 6 by 9 that is also it is same as 2 by 3 3 common नहीं गले 2 by 3 एठी 2 common नहीं गले 3 by 4 6 by 8 6 by 9 which is greater obviously 3 by 4 is greater so minus 2 by 3 is greater than minus 3 by 4 तो minus 2 by 3 टा minus 3 by 4 तो बड़ा आसीबो तमानी minus 3 by 2 टा सॉरी minus 2 by 3 टा कोड लाइज करिवो minus 3 by 4 to minus 1 by 2 भितरे बट एठी अछि केटा नहीं so x is not equal to minus 2 by 3 so x equal to 3 is the solution since x is equal to minus 2 by 3 does not lies in this interval so the solution is x equal to 3 तो बुझियो समझ the second part रे importance काई के अधिक है काहे कि हमें तो लेखु छ tan inverse x plus tan inverse of y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy if xy less than 1 मजे से कंडीशन रे यूज करिमिनी तर मते कोन प्रॉब्लम ही जिवो सो मोर लास्ट लाइन टा देखा जावनी तो सॉल्यूशन इज x equal to 3 समस्त बुझि परछ एटा एबले क्वेश्चन समस्त निजे करि परियो आ चला और किछ क्वेश्चन भी करिवे से टाइप रो क्वेश्चन कले कोन टाइम वेस्ट ही जिवो तम काम होउची तमे ता पर बीट टा करिवो इवन इफ कोटे क्वेश्चन तला क्वेश्चन नंबर 13 ना फर्स्ट बीट 13 ना फर्स्ट बीट तमार निजे सॉल्व करिवो तम एटा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13 एरा थर्ड बीट तमार निजे करिवो हम बर्तन कहउनी कारण करे टाइम वेस्ट ही जिवो आ कुछ क्वेश्चन भी जिवो ए tan इनवर्स x plus tan इनवर्स ऑफ y की बहुत सारा प्रॉब्लम देखो हम गोटे क्लास भी करथिले प्रॉब्लम ए क्लास में हमरे किछ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम पाउछे मे बे दो तीन टा क्लास रे पाठ शेष होई जिवो बट तमार यदि न करिवो पाठोड़ा तुमको अधिक पड़े जीवो अब क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन कहबा सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स simplify each of the followings suppose you have to simplify tan inverse a plus bx by a minus bx where x less than b by a you have to simplify this पहले टा मोस्ट इंपोर्टेंट ए थी कहीं इवन इफ तुम डेरिवेटिव पचरा जो डेरिवेटिव ऑफ दिस तबे गला को सिंपलीफिकेशन करले बटे तुमको इजी हबो आ जे tan इनवर्स रे भले क्वेश्चन हमें देखु छे सबले हमें चाहिमा
either it is tan inverse x plus tan inverse of y raised to or tan inverse x minus tan inverse of y raised to तो आपको मैं लिख दे परिबा tan inverse जदि मु कहबी tan inverse x plus y by 1 minus xy তাহলে এই পার্টটা নিহাতি 1 হবা দরকার এইটা 1 হবা দরকার কোন দলে 1 হবো we divide a in each term মানে এইটাକୁ ସବୁটা আমরা ডিভাইড করিবি এটা 1 plus b by a into x 1 minus b by a into x তাহলে এই কেসে কোন আসে পারি tan inverse x plus y by tan inverse x minus y that is tan inverse 1 plus b by a into x को टर्न कर देली क्वेश्चन में राउंड में लिखी छी कोन मन पड़नी 1 minus 1 into b by a into x we can write it as tan inverse 1 plus tan inverse b by a into x এটা কি আমরা আস করিব তাহলে কি since x less than 1 b by a into x less than 1 ये क्वेश्चन टी वेरीफाई कर दो बेटा अछि एडिशन क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन कहूची मैं तो भूलभाल क्वेश्चन लिखि देथिबि टी चेक कर दो समस्ते सिंपलीफिकेशन आ गोटे क्वेश्चन कहूची tan inverse a cos x minus b sin x by b cos x plus a sin x where minus pi by 2 where minus pi by 2 less than x less than pi by 2 and a by b tan x greater than minus 1 a by b tan x greater than minus 1 एटी भी सेम रूल यूज करिएको चाहिए जे tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy तो ये पार्ट मते 1 हवा दरकार b cos x टा मते b cos x टा 1 करियो दरकार तले वी हैव टू डिवाइड b cos x in each term that is a by b कारण a cos x by b cos x that is a by b minus tan x by 1 plus a by b into tan x कारण a sin x by b cos x that is a by b into tan x it is x minus y by 1 plus xy which is equal to tan inverse x minus tan inverse y that is a condition टा केते बेले होल्ड करिवो when 1 plus a by b tan x greater than 0 a condition आसला that is xy greater than minus 1 मन पड़छ कंडीशन टा ए कंडीशन टा रही छि that is a by b tan x greater than minus 1 now you can write tan inverse a by b minus x एटा हम करि परिबे क्वेश्चन की और बहुत सारा क्वेश्चन तो निजे निजे कर दे परिबा रिलेटेड से फर्स्ट क्वेश्चन रे चेक कर दबो मे भी क्वेश्चन टा के चेक पर शॉर्ट कर लिख देथिबी ए बी रो अल्टरनेटिव थे पारे कड़ा रेस्ट्रिक्शन टा काम कर नथला बोधे अच्छा और क्वेश्चन कहबे हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन if a greater than b greater than c greater than 0 if a greater than b greater than c greater than 0 prove that cot inverse ab plus 1 by a minus b cot inverse ab plus 1 by a minus b plus cot inverse bc plus 1 by
b minus c cot inverse ca plus 1 by c minus a is equal to pi. c plus 1 by c minus a is equal to pi. ये क्वेश्चन आम प्रूव करिवे. समस्त मन अछि ना नहीं. cot inverse x equal to tan inverse 1 by x if x greater than 0. कनोड कंडीशन रे पढिथिले. cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x if x is greater than 0. pi plus tan inverse 1 by x if x is less than 0. ए कंडीशन हम पढिथिले. समस्त मन अछि ना मन रेसिप्रोकल कंडीशन ने कहिथिले. पता नहीं कंडीशन यदि मन रखे हमें कर दे परिबे. टोटल ए क्वेश्चन को. अच्छा डी a b c ऑल आर ग्रेटर देन 0. तले cot इनवर्स ab plus 1 मते LHS रो स्टार्ट करिवे को करिया पर लिखि दोछ फर्स्ट a पॉजिटिव b पॉजिटिव. तले ab plus 1 कोन पॉजिटिव, bc plus 1 कोन पॉजिटिव and ca plus 1 greater than 0. कारण c positive a positive 1 the positive c plus 1 b positive assume and it is a minus b greater than 0 since a greater than b minus c greater than 0 and c minus a. it is important बोले देखो ध्यान दियो a greater than c obviously c minus a कौन less than 0. most important बोले ये पार्ट रही. so ab plus 1 by a minus b greater than 0, bc plus 1 by b minus c greater than 0, but ca plus 1 by c minus a कारण पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव. बता LHS से स्टार्ट करो. cot inverse ab plus 1 by a minus b plus cot inverse bc plus 1 by b minus c plus cot inverse c plus 1 by c minus a. आको मु लिखि परिबे tan inverse a minus b by ab plus 1 plus tan inverse b minus c by bc plus 1. किंतु एटा को सीधा लिखि परिबिनी काहे कि ना cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x if x is positive but here x is negative. So it is pi plus tan inverse c minus a by c plus 1. बुझि पालो समस्त ए पार्ट काहे कि आसला since cot inverse x equal to pi plus tan inverse x if x is less than 0. तो लेठी tan inverse a minus b by ab 1 plus ab आको 1 plus ab लिख परिबो which is the formula for tan inverse a minus tan inverse b. Yes, very formula for tan inverse b minus tan inverse c plus pi plus yes, very formula for tan inverse c minus tan inverse a. तले plus tan inverse a minus tan inverse a कैंसिल हो गेला minus tan inverse b plus tan inverse b कैंसिल हो गेला इक्वल टू केते आसीला pi. RHS क्वेश्चन रे ध्यान दो पड़िबो मु से प्रॉपर्टी गुडा भल से मन रखियो पड़िबो हम करथिले सब जिंस गुडा का तो मन रखियो पुणी हरानी पड़िबो. आ गोटे क्वेश्चन हम कहबा if a1 a2 a3 an are in a p if a1 a2 a3 up to an are in a p means arithmetic progression with common difference d then evaluate tan inverse d by 1 plus a1 a2 plus tan inverse d by 1 plus a2 a3 up to tan inverse d by 1 plus an minus 1 an.
आको में सिंपलीफाई करिवार अछि तले tan ऑफ tan इनवर्स एटा को लिखि परिबी a2 minus a1 equal to d since a1 a2 a3 an are in ap so a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 equal to an minus 1 equal to d. So in place of d you can write a2 minus a1 by 1 plus a1 a2 plus tan inverse a3 minus a2 by 1 plus a3 into a2 up to tan inverse an minus 1 by 1 plus an minus 1 an जानियो चढ़ कहीं गेसला since these are in AP लिखि दो चिन्ह ले पार्ट रे a2 minus a1 equal to a3 minus a2 up to an minus 1 is equal to d tan of we can write tan x minus 1 by 1 plus xy is equal to tan inverse x minus tan inverse y plus tan inverse x minus tan inverse y up to tan inverse an minus tan inverse an minus 1 तले ठीक प्लस माइनस कैंसिल हो गला या पड़े से tan इनवर्स a4 minus tan इनवर्स a3 ये भी कैंसिल हो जिवो बट ए टर्म रे कैंसिल हो कि हबनी तले हम देखिबा सबुठी सेकंड टर्म रे कैंसिल हो छि तले ए पार्ट रे कैंसिल हो जिवो कारण मोदी ए पार्ट को छाड़ दउ छि ए पार्ट को छाड़ देले ठीक कैंसिल हो छि एटा तले ठीक ए टर्म रे रहला या प्रीवियस टर्म रे रहइबो कारण एठी या प्रीवियस टा कोन थिबो कि an minus 2 minus n minus 1 n minus n that is n minus 1 minus n minus 2 so tan inverse plus n minus 1 minus this the previous side cancel jibo so tan inverse tan a1 sorry it is tan of this tan inverse a1 it is tan inverse an minus tan inverse a1 so you can write tan inverse an minus a1 by 1 plus an into a1 which is equal to an minus a1 by 1 plus an into a1 आको तो d फॉर्म रे लिखले हमें लिखि परिबा it is a1 plus n minus 1 into d minus a1 by 1 plus an into a1 which is same as n minus 1 into d by 1 plus an into a1 समस्त बुझियो छी समस्त यदि फार्मूला पढ़ा लेनी से क्वेश्चन भीतर जे से फार्मूला के यूज करके जो क्वेश्चन अछि एक्सरसाइज 2 समस्त कर दियो आ हार्डली जोडे 3टा क्लास भीतर कोर्स शेष होई जिवो एक्सरसाइज टा कंप्लीट होई जिवो